A very good morning, students. Let us continue chapter number 4, the Indian judicial system. We have already spoken about the Supreme Court, it is at the apex, and all those things we have already done in this first part of the chapter. How the judges are appointed, who appoints the judge, retirement, 65 years for High Court, for the Supreme Court judge. There is Chief Justice, there is Chief Justice of India, Chief Justice, and there is local, there is district courts are there, etc. We have already done this in the first part. This is the last part of it. We'll talk about judicial activism, functions of Supreme Court, judicial review, public interest litigations. Now PIL, High Court, introduction, functions of High Court, district and lower courts, the branches of law in India, civil law and criminal law. There are two kinds of law. Contribution of Indian judiciary. Judicial activism. The judiciary in India has now undergone a change and has become increasingly active. Now, see, as the year passes, different things come, advanced things come up. It can be advanced phone, advanced technology. So here also, slowly the changes came up in the judiciary also. It tries to provide legal protection to the marginalized section of the society, women, tribals, workers, farmers and children. So it gives legal protection. Legally, nobody can take anything without the proof or evidence. The lower class, weaker section group, sometimes they are tortured, they are harassed, और उनसे कुछ ज़मीन के पेपर हड़प लेते ज़बरदस्ती ज़ोर दबस्ती करके, but now they can't do. It is all about legal now. It seeks to fulfill the constitutional goal of justice and equality. Public interest litigations play an important role in proving judicial activism. Now it talks about public interest. It only speaks for the public. Any rights, what rights are there for the people if they are going through some difficult time regarding they are not getting proper justice, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा, etc. All those things. So they worked on it. Public interest litigations play an important role in proving judicial activism. Functions of the Supreme Court. The Supreme Court has a responsibility to settle disputes between the center and the states. And the states on one side and the states on the other side. So if any there are fights regarding boundaries or any issues are there, the Supreme Courts take the responsibility of solving the disputes. It gives orders to relevant authorities for the protection of the fundamental rights of the citizen. तो जो जिसको जिम्मेदारी दी है, relevant person, relevant authority दी जाती है to the relevant person to protect the fundamental rights. It can review decrees and orders of the lower high courts and review its own decision. Sometimes जो न्याय देते हैं local courts, वो ना, for example, as I told you, when you are not happy with the decision of the local courts, अगर आपको local courts में न्याय दिया और आपको वो पसंद नहीं आए, तो वो हाई कोर्ट में जाके you can ask for the rights and they can review your things. Means फिर से वो देख सकते हैं और उनका डिसीजन वो फिर दे सकते हैं. It can also give advice to the president in case he asks for the advice of the court to understand the legal aspects in the matters of public importance. So here Supreme Court has right to give the decision, and president को अगर president पूछते हैं कि क्या हुआ है, then he has right to give them advice also. Judicial review. One of the most important responsibility entrusted to the Supreme Court is the protection of the Constitution. So जो Constitution में लिखा गया है, sociality, equality, democratic rule, etc. If you see your textbook page, there is Constitution mentioned. So Supreme Court को ये ध्यान में रखते हुए law, कायदे, न्याय बनाने हैं, and they are going to give justice taking into consideration the constitution protection. ये constitution को सोच समझ कर संभाल के उसको protect करके जो भी है वो न्याय देने हैं. If any law passed by the legislature or any act of the executive violates any provision of the constitution, the said law, the act is declared illegal. Sometimes legislature law बनाते हैं, बराबर, ऑलरेडी हमने पढ़ा है,
और एग्जीक्यूटिव वो इम्प्लीमेंट करते, लोगों को लागू करते. बट समटाइम्स व्हाट हैपन, लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, वो लॉ बनाते लेकिन एग्जीक्यूटिव वाले उसको पास नहीं करते, दे डोंट एग्जीक्यूट इट. तो फिर वो कानून जो लॉ बनाते हैं दैट बिकम्स इलीगल एंड स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट उसे बंद करवाती है, दैट कंसिडर टू बी द इलीगल. दिस पावर ऑफ द कोर्ट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू. मतलब रिव्यू करना मतलब वो फिर से दोहराते, फिर से देखते हैं एक्सेप्टेड है कि नहीं ये कायदा जो बना है, जो लॉ बना है. इफ़ लेजिस्लेचर बनाते लेकिन एग्जीक्यूटिव अगर उससे वॉयलेट्स करते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट इट, देन दैट लॉ इज कंसिडर टू बी द इलीगल. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस PIL. Public interest litigation refers to the litigations filed on issues of the public importance. मतलब लोगों को लेके जो भी केसेस फाइल्ड हुए हैं, जो उनके पास लेके गए कंप्लेंट्स, तो उनके बारे में ध्यान रखने वाले, दिस इज़ वन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस. इट कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल सिटीजन. अगर ये जो ग्रुप है, दिस काइंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ओनली रिफर्स टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया, चाहे वो ग्रुप जाके कंप्लेन करे या इंडिविजुअल जाके कंप्लेन, और नॉन ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नमेंट NGOs ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव कि इनके साथ अन्याय हुआ है और मैं अगर NGO में काम करती हूँ, इफ आई एम अ सोशल वर्कर, तो मैं इनके तरफ से केस फाइल करूंगी. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस. द कोर्ट थिंक्स ओवर द क्वेश्चन रेज्ड एंड गिव इट्स डिसीजन. सो जो भी उनके क्वेश्चन है, जो भी इनके प्रॉब्लम्स है, वो रेज करेंगे और फिर देन द कोर्ट्स गिव इट्स डिसीजन. दे थिंक ओवर इट एंड द गिव डिसीजन. हाई कोर्ट. Introduction. The Indian Constitution conferred the Parliament with the power to establish High Court in each constituent state in Union. Now, हर एक स्टेट में, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा किया गया कि there should be a high court, and there are 24 high courts in India. There is chief justice along with the other justice in the high court. All the judges of the high court are appointed by the president, as we have seen before. President ही appoint करते हैं ताकि उधर कोई political pressure ना हो. There is no impartiality. The retirement of the high court. The retirement of the age of high court judges 62 और supreme court judge का 65. Functions of the high court. Now what are their functions? To supervise and maintain control over the lower courts in the judiciary. तो उसके नीचे जो lower courts है, मतलब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट आते हैं कि नहीं, यस और नो, पालघर डिस्ट्रिक्ट, सातारा एक्सेट्रा, दिस डिस्ट्रिक्ट. सो उसमें जो लोअर कोर्ट्स है, लोकल कोर्ट्स, जिन्हें तालुका या तहसील कहा जाता है, तो उनके भी कंट्रोल करना, उनको भी सुपरवाइज करना. टू गिव ऑर्डर्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. फिर ऑर्डर्स देना, you need to protect the rights of the citizen. To give advice to the governor while appointing judges of the district court. So district courts के जब judges appoint होते हैं, तब he has right to give the advice. District and lower courts, there are courts at district level and tahsil level. Tahsil means taluka level. Every district court has one district judge who is appointed by the governor with the advice of the high court. So governor. So high courts, district courts का judge कौन appoint करता है? Governor. लेकिन किसकी सलाह लेके, किसकी advice लेके? high court की advice लेके. The branches of the law in India. दो प्रकार के law होते, criminal and civil law. So civil law means deals with the conflicts with the effect of interfering with the right of the person regarding land, property. अगर कुछ ज़मीन का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी के बारे में प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा, तो ये सिविल लॉ काम करता है. सिविल लॉ. सो इस पर केस होना, अगर मेरा किसी के साथ ज़मीन को लेके प्रॉब्लम है, तो मैं सिविल लॉ के पास, सिविल आई विल नोट डाउन माई सिविल लॉ, दिस इज़ मेरा प्रॉब्लम है, सिविल केस में जाएगा ये. अगर लेकिन क्रिमिनल में मर्डर, रेप, सो ये क्रिमिनल केसेस हुए. सो सीरियस क्राइम्स सच एज थेफ्ट, चोरी का, रॉबरी, ड्राउरी, दहेज, मर्डर आर डील्ड विद द क्रिमिनल लॉ. एंड क्रिमिनल लॉ का जब आप कंप्लेन करने जाते हो, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप इज FIR दर्ज करना. FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद द पुलिस. आप सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, आपको
पुलिस में जाके FIR दर्ज करना होता है, दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. द पुलिस इन्वेस्टिगेट, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को विद द हेल्प ऑफ FIR, जो भी उनको लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ, तो वो दे विल इन्वेस्टिगेट एंड दे फाइल्स पिटिशंस इन द कोर्ट. फिर ये केस आगे बढ़ती है कोर्ट में. इफ द चार्जेस आर प्रूव्ड देयर आर प्रोविजन फॉर द सीवियर पे. अगर जो भी चार्जेस लगे हैं इनके ऊपर वो सच निकले, सबूत के लेके, एविडेंस को लेके, देन उनको सीवियर पनिशमेंट होता है. Contribution of Indian judiciary. The Indian judiciary has made significant contribution in the development of the country. There is respect and trust of common people in the judicial system. लोग ये justice judiciary को, अपना जो जुडिशियल सिस्टम है उस पर बहुत भरोसा करते हैं लोग, बहुत भरोसा बढ़ गया है. The judiciary has protected individual freedom. We are being saved, we have been given freedom and we are being protected. The federal system and constitution of India, they have played a greater role in strengthening the democracy in India. So the Indian judiciary have played important role in making our country more stronger. So we have finished with the portion for the semester and we have done already. Parliament has 3 sections which you have done: legislature, executive, and today we finished with the judiciary. So these all are related to each other. Legislature make laws, executive implement law, and judiciary they protect law. I hope this chapter is understood to you. Thank you, students.